Hello friends, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are good. Now today we are going to do slanting line. We are going to do slanting line. तो आज हम करेंगे slanting line. तो इससे पहले हम एक बार स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन रिवाइज कर लेते हैं because we have already completed standing line and sleeping line. Now we know how we can make standing line or sleeping line. So चलिए let's start kids. Starts from up, goes down. Very good. Starts from up and goes down. Excellent. Okay, now this is our sleeping line. Starts from left, goes right. Very good. Very good. Now we have already done some worksheet relating standing line and sleeping lines. Now today we are going to do slanting line. Okay, look at this rain. Rain goes toward left and toward right. And we have to start from up, goes down. Very good. Very good. Start from up and goes down. Very good. Okay, these are some worksheets related sleeping line, standing line and slanting line. वन मोर थिंग जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि आपने बच्चे का हैंड होल्ड नहीं करना है, चाहे वो गलत बट ड्रॉ करे चाहे वो ठीक ड्रॉ करे, बस आपने उसको एनकरेज करना है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड. ओके, अगर तो वो गलत ड्रॉ करेगा तो आप पूछ लेना, इससे उनसे पूछोगे ऐसे. अगर बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों के साथ खुद भी हमें बच्चे बनना पड़ता है, तो आप पूछ सकते हो अपने बच्चे का नाम लेके, मुझे नहीं पता ये कौन सी लाइन है, कैन यू टेल मी विच लाइन इज दिस, आई डोंट नो, तो प्लीज़ टेल मी विच लाइन इज दिस. ओके, वे ऐसे करके अपनी स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेगा एंड आफ्टर दैट लेफ्ट एंड राइट स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेगा, फिर स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा एंड फिर स्लीपिंग लाइन. अभी एक ही वर्कशीट में आपको कितनी सारी लाइन्स ड्रॉ करने के लिए मिल गई है. बच्चे को अपने खुद करने देना है, बच्चे का हैंड होल्ड नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. हम सम टाइम बच्चे का पीछे से होल्ड कर लेते हैं कि नहीं बच्चा कर रहा है, हमने बिल्कुल हैंड होल्ड नहीं करना बिकॉज ही इज़ एबल टू डू दीज वर्कशीट्स एंड ही नो अबाउट स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड ऑल्सो स्लैंटिंग लाइन. दिस इज आवर स्टैंडिंग लाइन and this is our sleeping line, and now this is our slanting line. This is our slanting line. Okay, now see next worksheets. Yeah. Okay, this is our slanting line. Very good. This is our slanting line. Very good. And now this is our standing line. This is our standing line. Very good. And this is our sleeping line. This is our sleeping line. This is our sleeping line. Now I don't know which line is this. Can you tell me which line is this? Very good, very good. This line is slanting line. And now can you tell me which line is this? Very good. This line is standing line. This line is our standing line. And now can you tell me this which line is this? Which line is this? This is our sleeping line. This is our स्लीपिंग लाइन. वेरी गुड. तो ऐसे करके हमारे बच्चे को स्टैंडिंग, स्लीपिंग एंड स्लैंटिंग लाइन अच्छे से आ गई होगी. ओके, हमने उसको खुद करने देनी है एक्टिविटीज़, चाहे वो पेंसिल से ये लाइंस ड्रॉ करे,
चाहे क्रेयॉन से, चाहे कलर से, जिससे भी, पर उसको खुद करने देनी है एक्टिविटी। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी मैं कि हमने अपने बच्चे को घर पर कैसे पढ़ाना है। अगर आप इसी मेथड से अपने बच्चे को करवाओगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे को घर पर काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। 4 साल तक का आपका बच्चा एकदम ट्रेंड हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ वी कैन मेक लेटर ए। वी कैन मेक लेटर ए एंड मैं आपको एक न्यू फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।